हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अच्छा, ज़रा सोच के बताना एंड कमेंट्स में लिख देना एट व्हाट एज डिड यू गाइज स्टार्ट वेयरिंग ब्रा, लाइक व्हेन वाज योर फर्स्ट ब्रा। बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू थिंक और मुझे लगता है कि शायद 10th के बाद या 12th के बाद, बट आई एम नॉट एबल टू लाइक प्रॉपरली थिंक। आई एम श्योर 10th के बाद ही होगा, आफ्टर 16 एंड ऑल। Anyways, ये ना, hi, first though, this is Jainee Gandhi. I'm an image consultant, a style curator and a sustainable style advocate. Okay, so now in terms of my audience, I know most of you are 35 years and above, लेकिन this video is very important because maybe आपकी शायद बेटी है and you are thinking whether to introduce bras to her or not at this age. Oh, but my daughter is only 11 years old, but she's only 13. Should I start a bra? She's heavy breasted, she's so thin and lanky. Should I start a bra? So I thought make कंसाइज सा इजी सा वीडियो है विथ क्विक थिंग्स एंड और मैं इसे बहुत ही नॉलेजेबल लेकिन इजी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स डाल देती हूँ ताकि यू कैन कंज्यूम, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर विथ देयर डॉटर्स, यंगर गर्ल्स हु वांट टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात, एट व्हाट एज कैन गर्ल्स स्टार्ट वेयरिंग देयर फर्स्ट ब्रा? ये ना कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। एवरीवन ग्रोज एट देयर ओन थिंग। प्यूबर्टी हैपन्स एट देयर ओन टाइम, बॉडी ग्रोथ स्पर्ट्स हैपन एट देयर ओन टाइम. Sometimes it happens at 9 years of age. Sometimes girls need bras at 11, sometimes they need at 12, 13, 14. So it's very different from person to person on their body, and mostly around their puberty is when they need bra. Ideally इतना complicated नहीं चाहिए। तो basic 3 things to remember is, number 1, जब ना breast buds start developing, पहले breast buds inward होते हैं और जब वो outward आते हैं यानी जब वो develop होने लगते हैं, that's the time that you should introduce a first bra, a training bra. और मैं ये आगे discuss करती हूँ कि what kinds you can introduce on, but this is the first that you can start introduce. Second, when your daughter complains to you कि जब वो भागती है, jump करती है, उसे chest में hurt होता है, या when she bends and she does all these dance and other physical activities, तो उसे hurt होता है, that is also your clue कि the breast needs support, so you should buy her a training bra. The third point is, the chances are that your daughter has started developing breast quite sooner than her friends, तो वो heaviness of breast आपको दिखता है, that's a time to start investing in a bra. So ये 3 points definitely याद रखिए. As a mother, as a sister या as a aunt, आपका जो भी relationship है with this young girl, just remember that the way you will talk to her, वो उसका image बनता जाएगा for quite some years. Stop sexualizing the bra. मतलब वो जो हम सोचते हैं, the lacy bra, the low coverage bra and the strapless bra and बहुत सारे होते हैं, उसमें हमें वो गारमेंट को सेक्शुअलाइज कर दिया है. ब्रा इज अ सपोर्ट गारमेंट. ट्रीट इट लाइक अ सपोर्ट गारमेंट. मेक इट लाइक अ एवरीडे कॉन्वर्जेशन. मेरा बेटा 13 साल का है तो मैं उसे छुपाती नहीं हूँ अपनी ब्रास. इट्स हैंगिंग इन द बाथरूम, इट्स हैंगिंग, इट्स लाइक अंडरवेयर. It is part of body that I need to support my body. It's as simple as that. Okay. So first, how to pick your first bra. तो पहला ही एक स्लिप ऑन ब्रा आता है. जैसे हम स्पोर्ट्स ब्रास आती है विदाउट हुक, विदाउट एनीथिंग, इट्स लाइक अ टी शर्ट. गो टू जॉकी, गो टू इवन ट्रायम्फ हैड दिस बिफोर, लेकिन आई थिंक जॉकी कॉटन वंस आर रियली नाइस. अगर आपके डॉटर की ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है और सिर्फ बड्स बाहर आने शुरू हुए हैं, देन दी स्लिप ऑन ब्राज आर रियली नाइस. दे आर ऑलमोस्ट लाइक ब्रा टॉप्स या ब्रालेट्स, जिसमें ना कोई कप्स बिल्ट होते हैं, जिसमें ना वायर्स होते हैं. इट्स अ सिंपल, जस्ट इमेजिन लाइक अ क्रॉप टी शर्ट जिसे आपने पहन लिया, सिर्फ हल्का सा पैडिंग होता है ताकि निपल शो ना हो. सो इट्स लाइक अ नाइस कॉटन लेयर. तो गर्मी का सीजन है तो भी चलेगा, ठंडी का सीजन है तो भी चलेगा. सेकेंड, अगर आपकी बेटी थोड़ी हैवी चेस्टेड है एंड आपको लगता है कि ना दीज स्लिप ऑन्स आर नॉट वर्किंग, देन बाय दीज कॉटन ब्रास. वो वाइट कॉटन्स नहीं, ओके, दोज वाइट कॉटन्स आर नॉट ब्रा बिकॉज दैट्स जस्ट अ कपड़ा, उसमें कोई लेयर, कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं है. सो यू विल गेट दीज ट्रेनिंग ब्रास. वायर्स नहीं होते हैं, सिर्फ हल्का सा सपोर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कप्स और एक हल्का सा लाइट पैडिंग होता है टू प्रोटेक्ट देयर body. So bras essentially is a support garment which will help your shoulders and support your under your bust, ताकि when you are running, exercising, walking, dancing, तो वो आपके breast को support करेगा. The third thing is, when you are going to buy a bra, don't make them feel awkward when you go to a store कि हाँ don't try this. Don't start that conversation like that. आप उन्हें confidently store में लेके जाइए and you tell them that okay, let's try couple of things, what works for you. The fourth thing is, if your daughter is absolutely heavy chested, then don't make her conscious कि when she's jumping her bust will move, right? So don't make her conscious कि your bust is moving so much. वो अपनी body को लेकर कितना conscious हो जाएगी. So
Your responsibility as a mother, as an aunt, is to find solutions and not make her conscious about her body. So please don't do that. आप जाएंगे जब, when you go to stores ना, you will find things for heavy busted teenage girls also. और अगर आपको वो solutions forever, for example आपके country में नहीं मिलते हैं, then what you should do is you should go to this women section and buy basic bras from there. तो मैं ये basic bra की एक guide भी add कर रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने video किया है उसमें जो basic bras हैं that you can definitely buy for your girls. Wires are not important for young girls. Wires basically are when your breasts are sagging, तब करते हैं. But if your daughter is comfortable later on, maybe you can. But as a starting, I would suggest कि, you know, it's a very personal choice to use a wired bra or not wired bra. I wouldn't suggest to start with wired bra. I leave that decision to you because it's, you know, you are close to the person. So make that young girl try. वो वैसे भी इतना awkward feel करती है. Let her try all those things. The last fifth point is that what bras to buy. Have a nude bra and a black bra for sure. मतलब वो nude और black ना, वो जैसे हमारी nude bras और black bras कैसे हमारे कपड़ों में काम आते हैं, वैसे उन्हें भी काम आएंगे. After that, whether they want to invest in some spotty print, some floral print, let them do. It's all right. मतलब let them have fun with that garment that they are wearing inside. It need not be boring. अगर इसे आप एक रेगुलर गारमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर हर. शी विल बी ओपन टू टॉकिंग टू यू अबाउट एक्सप्लोरिंग these products with you, if I may say. So that's it. I hope this video was useful and you can share it with your friends and family jinki, you know, they are young girls and they don't know how to pick up their bras, their first bras, and the mothers are confused ki kya kare kya nahi. Please write in the comment section if you have questions. मैंने ये बड़ा ही basic video बनाया है for the ease of understanding for all of you guys. But if you have more such video ideas, then let me know कि आपको और कौन से topic पे information चाहिए. I can create a video for that. Like, share, subscribe and comment below all the jing bang. Until I see you next time. Bye bye.